परमिशन बुक, एक सेकंड। Yeah. कांट रिकॉल में परमिशन। यार सेम टॉपिक फिर 2-2 3 दिन करेंगे तो 3-4 महीने चलेगा ऐसा। अरे नहीं, सो यू हैव टू गो टू परमिशन। एक बार दिखा दूंगा मैं। परमिशन रोल्स और परमिशन ग्रुप्स है हमारे पास। हाँ, दो परमिशन रोल एंड परमिशन ग्रुप, ठीक है। तो परमिशन ग्रुप गॉट में इट। हम कौन कौन स्टेट वो वाइज ग्रुप में बनाया क्या? होना चाहिए बोल के नहीं, स्टेट वाइज हमने सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए दिखाया था एग्जांपल में हम्म वो हम्म हम्म एक्सेल शीट में। हम्म बट इन द सिस्टम आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड सुपर एडमिन्स। एक नया ग्रुप बना के हम्म उसमें सबका आईडी डाल दिया। सो ग्रुप में जितने हम्म भी बंदे हैं वो सब दिखेंगे, हम्म बट उनका परमिशन क्या होना चाहिए, दैट विल बी पार्ट ऑफ द परमिशन रोल। हम्म तो परमिशन रोल में ओपन करके परमिशन रोल में मैं सिस्टम एडमिन सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम्म ओके इसमें जाके आई टोल्ड यू दैट मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन पोर्टलेट इज अ effective dated entity. It means हम्म it will have a start date and an end date. हम्म So when we say we have a start date and an end date, it means you will be able to see those permissions here. Okay, second part में, second step में permission बोल के click करना है यहाँ पे। This is the category employee central effective dated entity, इसमें जाना। ओके हम्म फिर यहाँ पे पोर्टलेट वाइज आपको फील्ड्स दिखेंगे। सी दिस इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन पोर्टलेट। ऑल दीज फील्ड्स आर रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके ऑल दिस आर कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स। ये देखो ये ऑस्ट्रिया का है, बेल्जियम का है ये। ओके लेट्स नॉट गेट टू डीपर इनटू परमिशंस एज ऑफ नाउ। The my expectation is when you create custom fields, I want you to also give permissions. हम्म Okay. See, I'm not sure if you can recall. Yesterday I've told you that आपने नया fields तो configure कर दिया, but you didn't tell the system who should have access to those fields. So how will the system know that okay अविनाश को ये दिखाना चाहिए कि नहीं? Fields तो है. हम्म So for the system to decide whether to give permission or not, we have to come to permission role हम्म और परमिशन रोल में आके आपको वो रिक्वायर्ड परमिशन देना पड़ेगा। ओके ओनली आफ्टर यू गिव द रिक्वायर्ड परमिशन, व्यू देना है, एडिट देना है या दोनों देना है, बेस्ड ऑन दैट द सिस्टम विल show you the fields in the front end in viewable mode or or editable mode. Okay, so since you have created these fields in employee data, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा लिस्ट। What are the name of the fields that you have created? Do you remember? नेम ऑफ द फील्ड That you have created yesterday. वो person info पे फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, फाउंडेशन। ओके ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। पिक लिस्ट फाउंडेशन ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल एम्प्लॉय, सॉरी। या let me open your fields. ओके इसमें फाउंडेशन ऑब्जेक्ट बोल के आपने क्रिएट किया, दिस इज नॉट enabled. So if you don't enable this field, it will not even appear in the permissions.
ओके अपने फील्ड तो क्रिएट कर दिया एंड लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस फील्ड एज ऑफ नाउ देन यू कैन डिसेबल इट हियर ओके व्हेन यू सेट दिस टू यस then it will become mandatory. But if you're setting the field to no, it means आप field enable नहीं कर रहे हो ऊपर से mandatory करना चाहते हो, then system will not allow you to do it. ये क्या? How did it enable it? Normally, it should not allow you to make it mandatory because system should let you maintain the data. See, एक field है, let's say यही field है, foundation object. Okay, so you're saying that it is a mandatory field. Okay, but आपने enable नहीं किया है, तो जब वो field mandatory होगा और आप enable नहीं करेंगे तो how will I maintain it? So normally it should be enabled and also mandatory should be yes. It should not be disabled and the mandatory should not be yes. तो अभी मैं फिर से enable कर रहा हूँ इसको और all the other fields are also enabled. यहाँ पे employee और foundation object. Sorry, pick list and employee. Yeah, इनका हम permissions देंगे पहले. Let me refresh the screen. जो भी manage business configuration में changes हुआ है वो permission roles में भी reflect होना चाहिए. Yeah, just hold on, yeah. Just give me a minute. Hello? Yeah. Huh. Let me redo it. Okay, एक बार आप फिर से देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ. Okay, I'm going to create 3 different fields now. Okay. First thing I'm selecting custom string 1. और एक बार हमने custom string 1 यूज कर लिया तो you'll not be able to use another custom string 1. यहाँ पे दिखेगा नहीं. Okay, 2 और 3. Let me create some more. Okay, मैंने 3 string field select किया. It means it will accept alphanumeric. Okay. Then I will also select one date field. Okay, date के लिए I want to capture date inside that field. Then I'm selecting long. Long बोले तो ये बहुत बड़ा number लेगा. Then I will also can select decimal. Okay, so in this way you can try to practice. जितने भी options हैं वो सब नीचे से select करो. See what are all the different custom data types you have. String है, date field है, long है, उसके बाद double. Okay, all these are custom fields. जो भी custom से start करता है, all those are custom fields. The other ones which have names, all these are standard fields. Okay, तो यहाँ पे मैं एक एक करके for each different data type I've selected one or a couple of fields. String के लिए मैंने 3 select किया, date के लिए एक, long के लिए एक, double के लिए एक. Okay, then start giving some names here. Okay, first one is let's say religion India. Okay, second one
एम्प्लॉय peer और टीम मेंबर बोल के दे रहा हूँ. फिर उसके बाद लोकेशन, because you want to link it to location. Okay, you know that you are linking this particular field with a foundation object, but हमें फ्रंट एंड में क्या दिखना चाहिए, लोकेशन बोल के दिखना चाहिए. इफ यू वांट टू लिंक इट टू लोकेशन, okay, how will I know which foundation object you have linked it to? You know it as a configuration guy, because you can go to the backend and you can see what you have configured. बट अगर मैं यही चीज एम्प्लॉय को दूंगा मेंटेन करने के लिए, सो व्हेन ही विल सी फाउंडेशन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट एंड, ही विल नॉट नो व्हाट इज फाउंडेशन ऑब्जेक्ट. उनको वो समझ में भी नहीं आएगा वो टर्मिनोलॉजी. दैट इज ऑल बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड का टर्मिनोलॉजी है वो. यू हैव टू गिव अ लेबल नेम विच इज आइडेंटिफाइबल. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं रिलीजन इंडिया बोल के एक सेलेक्ट किया, या जहां यहाँ पे मैं एक पिक लिस्ट असाइन कर दूंगा. एम्प्लॉय टीम मेंबर बोल के यहाँ पे एक नया फील्ड क्रिएट किया. फॉर दिस वन आई विल असाइन अ एम्प्लॉय टाइप. ओके, एंड देन दिस वन आई विल असाइन अ और मैप इट टू अ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट लोकेशन. और ये डेट फील्ड, डेट ऑफ क्या देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी दे देते हैं. नहीं, दिस इज सी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. पर्सनल इन्फो में हम ज्वाइनिंग का रिलेटेड कुछ नहीं देंगे. दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर ओन सेल्फ. ठीक है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग वैसे चीज हम नॉर्मली क्या है, जॉब इंफॉर्मेशन में क्रिएट करेंगे या एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में. सी, डेट ऑफ बर्थ इट इज ऑलरेडी देयर इन पर्सन इन्फो. Okay, so that is the reason I wanted you to go through these fields every day. एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ओपन करके वो फील्ड्स देखने के लिए बोल रहा था, क्योंकि यू विल रिमेंबर वॉट आर फील्ड्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, वो सिस्टम में है कि नहीं है, तो कौन सा पोर्टलेट में है. अगर मुझे कुछ नया क्रिएट करना है तो वो कौन सा पोर्टलेट में ज्यादा मैच करेगा. if let's say if you say something related to my department, so department बोले तो it is related to your work job, तो जॉब रिलेटेड फील्ड है, तो कैन आई क्रिएट इन पर्सनल इन्फो? नो, दिस पोर्टलेट इज रिलेटेड ओनली टू योर पर्सनल सेल्फ, योर पर्सनल थिंग्स. तो जब डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर जॉब. तो जॉब के लिए हमारे पास क्या है, जॉब इन्फो पोर्टलेट है, तो यहाँ पे क्रिएट करना है. बट वेन यू गो टू जॉब इन्फो, वेन यू सर्च और वेन यू सी द एग्जिस्टिंग फील्ड्स, you will find a department already existing. So it means you don't have to create a new field called department. So now you have to come up with something else, some new field. So you can just link it to your current job and see if there are any job related fields that you can maintain. तो वैसा सोच के real time का you can slowly I'll start giving you those assignments where you can you have to decide what is a appropriate portlet in which you can create those fields. Okay, but for now I want you to just explore the different options. Okay, get used to this. वो होने के बाद you can start creating those fields, and then वो permissioning वो सब दे देंगे. उसके बाद you can start maintaining those fields for the employees. So first thing, you have to get used to how to create fields here. So we have created some fields here. यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ, ये तो वेडिंग एनिवर्सरी बोल के एक दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल थिंग. इट्स नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, कंपनी का रिलेटेड कुछ भी नहीं है. नहीं, लॉन्ग है. यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, वेरी लॉन्ग. रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, या
व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, बट यहाँ पे लॉन्ग है। लॉन्ग बोले तो ओनली नंबर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। सो अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे तो वो अल्फाबेट भी आएगा। सो लेट्स मेक इट ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर सो दैट यू कैन टाइप ओनली नंबर। ओके, देन उसके बाद डेसिमल है। डेसिमल में हम क्या यूज कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ करेंगे, टोटल सेविंग्स। ओके, लेट्स से अभी हमने पूरा फील्ड्स क्रिएट कर दिया। नाउ व्हाट विल डू इज विल गो इनटू ईच एंड एवरी फील्ड एंड विल ट्राई टू लिंक इट टू सम ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो ड्रॉप डाउन होना चाहिए या फ्री टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपको फ्री टेक्स्ट रहने देना है तो यू डोंट हैव टू लिंक इट टू एनीथिंग, you can just leave the field like that, then the system will allow you to type anything. Okay, वो खाली रहेगा बस, ड्रॉप डाउन वैल्यूज कुछ दिखाएगा नहीं, so you can just type whatever value that you want. But if you want the employees to select a particular value from the list of values, then you have to link it to a pick list. Okay, so मैं type of reference object को मैं pick list बना रहा हूँ. So when I select pick list, I will select what pick list I am talking about, which set of values I want to link it to. So यहाँ पे रिलीजन मुझे इंडिया का ऑलरेडी मिल गया है, तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, so here I have selected pick list and I have selected the relevant pick list. In the reference object you are not going to mention anything. ये हो गया. That is only for foundation object. Correct, exactly. Next, employee team member. So I'm talking about employee. I want to maintain my employee team member. नहीं तो employee family member. Let's say in case if there is some family member inside your organization. Okay, he is an employee and also he is a family member. So then you can give the type of reference object as employee. That's it. यहाँ पे पिक लिस्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस भी जरूरत नहीं है. The system will understand that this field is linked to all the employees in the organization by default. Okay. ठीक है, so when you're selecting pick list here, you have to select the pick list ID here. When you select employee, you don't have to select anything else. Okay, उसके बाद location. Now this is a little tricky. यहाँ पे हम फाउंडेशन ऑब्जेक्ट बोल के सेलेक्ट कर रहे हैं, बट फाउंडेशन ऑब्जेक्ट के लिए पिकलिस्ट की तरह ड्रॉप डाउन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल के मैन्युअली देना पड़ेगा. सो हाउ विल यू गेट द रेफरेंस ऑब्जेक्ट? एक्सएमएल ओपन करके, अगर एक्सएमएल का ऑब्जेक्ट है तो एक्सएमएल में देखना पड़ेगा. ओके, इन केस इफ दैट इज एन एमडीएफ बेस्ड ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन. ओके, configure object definition for all the MDF objects. Excellent. Configure object definition. Yeah. So you have to go there, and यहाँ पे I've told you every time in anywhere in SuccessFactors screen, left side में search मिलेगा. It means you can select the existing data. On the right side, you can create new. If you want to create anything new, you come to the right side and select the relevant object. Okay, so अभी मुझे search करना है. What should I search? Let's say you want to link this particular foundation object to your department. Okay, normally department is something related to your job information, so we will not create foundation objects related to your job in the personal information portlet. First thing you have to remember that. But let's say हमें job की नहीं, I want to just say home location. Okay, so you want to just link it to your location of your home. तो मुझे लोकेशन को लिंक करना है, बट लोकेशन क्या है? वो XML बेस्ड ऑब्जेक्ट है. सो आई हैव गिवन दिस लिस्ट अर्लियर. दीस आर ऑल दी XML बेस्ड ऑब्जेक्ट्स. और भी है यहाँ पे, लाइक
पे रेंज, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे देखेंगे तो लीगल एंटिटी, बिजनेस डिपार्टमेंट, हाँ ठीक, और जॉब कोड, क्लासिफिकेशन. ओके, so you can refer to this list, and अगर आपको लोकेशन का रिलेटेड कोड डालना है तो यू हैव टू ओपन द कॉर्पोरेट डेटा मॉडल. सो व्हेन यू ओपन द कॉर्पोरेट डेटा मॉडल यू कैन सर्च फॉर लोकेशन, और लोकेशन का मुझे आईडी मिल गया है, HRIS फील्ड आईडी. इसको हम कॉपी करके ये फील्ड में डालेंगे, रेफरेंस ऑब्जेक्ट फील्ड में. ठीक है, इट मीन्स यू आर लिंकिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड टू द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट लोकेशन. Let's say if you want to link it to a MDF based object, then what you have to do, as I've told you, you have to go to configure object definition. Okay, and यहाँ पे configure object definition, this is the screen. Then again in the search you have to select object definition. Okay, select object definition and then try to search for whatever foundation object that you want to maintain. So in case if you want to link your field to a foundation object department, then search for department. तो मुझे यहाँ पे कोड बोल के मिल गया. ओके, तो इसका लेबल नेम है डिपार्टमेंट. सो बोथ आर सेम, बट वी ऑलवेज पिक अप द कोड. ओके, वी नेवर पिक अप द लेबल नेम, never ever use the label. The code always remains unique and it will never change throughout the system lifecycle. So copy this department and then go to your field and यहाँ पे आपको वो पेस्ट करना है. So now it means you are linking this particular field to all the departments in your organization. Okay, so this is how you create foundation based related fields. ओके, तो ये यहाँ पे मैं लोकेशन ही दे रहा हूँ. एंड देन वेडिंग एनिवर्सरी. तो डेट, यू ऑलरेडी मेंशन टू द सिस्टम दैट इट्स अ डेट फील्ड. ओके, तो यहाँ अंदर आके कुछ करने के लिए कुछ नहीं है. ओनली इन केस ऑफ ड्रॉप डाउन वैल्यूज, आइदर इट विल बी अ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट और पिक लिस्ट और एम्प्लॉय टाइप, उसके लिए हमें डिटेल्स में आके यहाँ पे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा. बट सिंस यू ऑलरेडी सेलेक्टेड डेट टाइप फील्ड, यहाँ पे आपको डेट के लिए कुछ और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं. इट विल बाय डिफॉल्ट शो यू द कैलेंडर. और रजिस्ट्रेशन नंबर, this one you're saying that it's a number type of field, and number type of field, in case if you want an employee to select a registration number which is already part of your organization, it means it is already defined, then what you can do is you can create pick list with all the registration numbers and ask employee to select any one of them from the drop down. Okay, but the company might not be capturing or maintaining the complete database of the all the registration numbers. Okay, so in that case it will ask the employee to type your registration number, so it will leave the field as a free text. Okay, so let me show you on a employee. Okay, so let's go to personal information. So this is called a free text where I can type anything. Okay, this one is called a pick list because I have a drop down. Okay, nationality, this is a standard field. Title, again this is a pick list. Okay, or
Do we have any other language script? यहाँ पे भी मुझे drop down मिल रहा है. So again, it is a pick list. See, again, this is a free text. Whenever I say free text, it means system will allow me to type anything. But यहाँ पे एक restriction है, it should not exceed 12 characters. So how do you define this? Manage business configuration में जाके, so for your registration number, you can click on details. Okay? वो नीचे आएगा वो और यहाँ पे नीचे बॉक्स बना हुआ है इधर नीचे. गो डाउन. ओके, मैक्सिमम लेंथ. ओके, यहाँ पे मैं 10 कैरेक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ. When you say 10, it means your registration should not exceed 10 numbers. You can type in any number, but it should not exceed more than 10. Okay, then we'll see other fields also. Visibility. Visibility means either it should be no selection बोले तो it will not show you this field. Okay, you have to either give edit or either view. So when you say view, यहाँ पे मुझे field में कुछ value डालने के लिए मिल रहा है. I'm able to type something. Okay, when you set it as view, it will be grayed out. You will not be able to maintain anything. Okay, so you have to, if you want the employees to maintain the data, you should always set the visibility to edit. Okay, next we have masked. Masked बोले तो, like let's say if date of birth, the company has a policy that the other employees or no one should be able to see your date of birth. Or let's say और कुछ details. Let's say आपका marital status. Some people might be divorced or separated. So people actually might make an issue out of it. So just to avoid all that, just to keep some of the fields as sensitive information and they don't want to show it to all the employees, they can mark those fields as sensitive information. बोल तो जब आप यहाँ पे मास्ट को yes करोगे तो it will show stars when you open the field. Okay, so let's say आपका password है, तो what will happen when you type your password? You will see all stars. It means you are trying to hide that information. आपको पता है आप क्या टाइप कर रहे हो. So in the same way, when you set a field as mask, the guy or the employee who's maintaining, he can able to see that field. कोई और वो field देखने के लिए जाएगा तो it will not be visible. It will show stars only. Okay, so in case if you want to hide the fields values, then you set the mask as yes. Okay, log read access. Log read access बोले तो when you want to do some audit, like let's say who has changed this field, when did he make this change, on what day, what was the field earlier, what is the field now. Let's say आपने गलती से कुछ change कर दिया है. Okay, and the company wants to know when did you make this change, or even the company or the HR will ask you like, Avinash, why did you make this change? You will say that no, I don't remember making this change, I never made this change. Let's say आपका जो change है वो कुछ payroll में कुछ impact हो गया है. तो now because of that the management will say, I want to understand who has made this change, how did he get access to this. So just to make sure who has made this change, company will run audit reports. Okay, so when they run audit reports, it will show you in the report it will show the details of these fields, who made the changes to these fields and when did they make it. So in case if वहाँ पे आपका नाम दिखेगा, then they'll again come back to you saying that we have run the audit reports and we found out that you only have made this change. So in case if you're not supposed to do it, शायद वो कुछ warning कुछ देंगे. If someone else has done it by mistake, they will be asked not to make such mistakes again. तो ऐसे audit log कब हुआ, कौन किया,
why did he do it, वो सब details अगर ना why का छोड़ो, who did it and when did they do it, वो changes, वो रिपोर्ट हमें निकालना है, तो यहाँ पे ऑडिट लॉग को हमें ट्रू करना है. If you set it to false, it means this field is not auditable. Okay, you cannot create reports based on these fields. Okay, next, maximum length, you can set your maximum length based on your requirement. Maximum fraction digits, it means if in case if it is a decimal type of field, how many decimals you want to see. Okay, अगर आपको 3 दिखना है तो you can select 3. show trailing zeros, अगर zeros हैं तो zeros दिखना है कि नहीं. ओके, 0.0000 बोल के 4 zeros हैं, so should it show you those zeros or not. if your number is like, let's say 3 कुछ ऐसा है, so I don't want to see this zeros, it's not required, right? zeros दिखाने की जरूरत ही नहीं है. so if you want to show like this trailing zeros, no करना है. if you want to show the number as it is, zeros भी मुझे देखना है, then you will set this to yes. Okay, then allow import बोले तो there are times when you can import the data, like let's say आप एक एक एम्प्लॉय के लिए मेंटेन कर रहे हो, so it will be easy for you to maintain data for each employee manually. But if your HR says you have to update some information for 100 different employees, तो एक एक एम्प्लॉय का प्रोफाइल ओपन करके, वो फील्ड ओपन करके टाइप करना है, सेव करना है, वो टाइम टेकिंग भी है और शायद मिस्टेक भी हो सकता है. शायद एक एम्प्लॉय को 1000 डालना है और एक एम्प्लॉय को 1010 डालना है. By mistake, if you interchange the values, again it will be an issue. So to avoid those things, we sometimes try to import the data. Import बोले तो we maintain the data in an Excel sheet and we import for all the employees at once. So should this field allow you to import data? If you set this to no, it means this field cannot be importable. The field always should be maintained manually. Okay, in case if you set it to yes, it means yes, you can import data into this particular field. Refresh compensation required. So this one, let's say आपका department change हो गया है in the middle of the year. So whenever your department changes, okay, let's say आपका salary में कुछ changes आएगा. Okay, so let's say ये आपकी कंपनी में एक रूल है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो उसका सैलरी 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेट्स से अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो उसका सैलरी शुड बी अराउंड 11 लाख. तो when someone changes your department from sales to marketing, by default your compensation has to change accordingly because that is a company policy. So जब भी आपका compensation का related कुछ change हुआ है which will impact your compensation, and if the company wants to update that compensation automatically, then during that time the compensation should refresh automatically. So for that you will set this to yes. It means whenever there is a change in the field value, okay, this particular field, the compensation portlet will get refreshed. Okay, so based on the rules that you have defined or the configuration, the field values might get updated in the compensation portlet. Okay, अगर compensation में कुछ भी change नहीं होना चाहिए, whenever this field changes, nothing should happen in the compensation, then you can just select this to no. Okay, then mapped domain attribute name. I'm not sure about this one. ये थोड़ा नया दिख रहा है. Let me make a note of it. Okay, so ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. So we have covered the basic configuration for all the fields. Okay, so let me now correct these information.
show trailing zeros, yes. Allow import, yes. Log read access is yes. Masked is yes. Visibility pick list. So this is a registration number. So I'm not linking it to a pick list. I'm not linking it to a foundation object. I'm not saying that this is an employee type. So it's going to be a free text. I can Hmm. type in any number. Now total savings. This also I want to mask. It means I don't want to show it to anyone. It should look like stars for all the other employees. Hmm. Okay, total savings is the default label name, and I'm not linking it to a pick list or an employee or a foundation object. So it means again this field is a free text field. तो मैं यहाँ पे save कर रहा हूँ. Okay. So I've created some 6 to 7 different types of fields. Hmm. Okay, ये मेरा custom string से 11 तक पूरा fields ready हो गया. Now the fields are ready, but if I want to see them on the personal information of an employee, Permission. मुझे permissions देना पड़ेगा. Exactly. Hmm. तो if I go to personal information, यहाँ पे show more बोल के आ रहा है. So यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरा fields कुछ भी नहीं दिख रहे हैं. That's because I didn't tell the system or configure what kind of permission should I have to these fields. Hmm. Okay. So then what I'll do, I'll go to permissions. यहाँ पे मैं इसको एक बार refresh करूँगा so that the fields will start reflecting. तो परमिशन रोल, मैनेज परमिशन रोल, उसमें जाके मैं सिस्टम एडमिन का रोल ओपन किया था. ओके. और यहाँ पे सेकंड सेटिंग्स में परमिशन सेटिंग्स, आई क्लिक ऑन दिस एंड देन आई हैव this employee central effective dated, because personal information is an effective dated. It means it Hmm. has start date. See all these fields: location of home, employee family member, religion India, वेडिंग एनिवर्सरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल सेविंग्स, ये सब फील्ड्स मुझे दिख रहे हैं. सो आई एम गिविंग एक्सेस टू एडिट करेक्ट एवरीथिंग. Hmm. ओके. सो Yeah. लेट्स से फॉर वन ऑफ द फील्ड टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मैं सिर्फ व्यू का एक्सेस दे रहा हूं, व्यू हिस्ट्री एंड व्यू करंट. यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस. ओके. और इसको मैं, ठीक है, only for one field let's make it viewable and let's see what will happen on the employee profile. So I have given the required permissions to all those fields. हो गया. Then I'll refresh this once again. I'm refreshing the employee profile. Go to personal information. तो यहाँ पे मुझे show more बोल के दिख रहा है. Just click on this and see हमारा पूरा fields दिख रहे हैं यहाँ पे. Religion India, Hmm. employee family member, location, wedding anniversary, registration, total saving, ये सब दिख रहा है. So now if you want to maintain this, click on edit. Okay. So Hmm. where are my fields? Okay, show 7 more fields. Click on this. See, these are all my fields, right? Hmm. So registration number मैंने सिर्फ view का access दिया है, if you can remember. Hmm. तो यहाँ पे क्या हुआ, grayed out है. I'm trying to type something but it is not allowing me because I have given only view permission to the registration number. Hmm. Okay. और यहाँ पे लेट्स गो फील्ड बाय फील्ड. रिलीजन इंडिया, यहाँ पे मुझे पूरा पिक लिस्ट मिल रहा है, वैल्यूज, पिक लिस्ट वैल्यूज मिल रहे हैं. What is this pick list values related to? It is related to all the religions in India. Religion. Hmm. Okay, let me select some religion. Then employee family member. So what is this? It is a employee type. तो इसीलिए मुझे ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं मिल रहा है. But when I type something, okay, let's say I type
लूसी. ओके, अगर लूसी बोल के कोई एम्प्लॉय है तो आई एम एबल टू फाइंड हर. ओके, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं मिल रहा है, जस्ट लाइक पिक लिस्ट. पिक लिस्ट के लिए क्या है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा. ओके, बट एम्प्लॉय के लिए यू हैव टू सर्च फॉर द एम्प्लॉय. जो भी नाम आप यहाँ पे सर्च करोगे, जितने भी एम्प्लॉयज वो नाम से है वो सब आपको दिखेगा लिस्ट में. ओके, देन यू हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द एम्प्लॉय हु इज योर फैमिली मेंबर एंड देन लोकेशन ऑफ होम. सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव लिंक्ड दिस पर्टिकुलर फील्ड टू अ लोकेशन. राइट, लोकेशन फाउंडेशन ऑब्जेक्ट से हमने लिंक किया है. सो दैट्स वाई जितने भी लोकेशंस हैं वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे. So I can select any of the location from the drop down. Then wedding anniversary. As I said, wedding anniversary is actually a date type. Okay, wedding anniversary. This is the label name. This is the code. So code में देखेंगे तो ये custom date one. Okay, these are all strings. Strings में alpha numeric accept करेगी. Date में सिर्फ date ही allow करेगा. तो when you select custom date one, the system by default it will show only date or calendar. You will not be able to select any other value other than date. You cannot type any value, you cannot give any number, or you cannot select employee or anything else. Only date is possible when you select date type field. Now registration number, you have enabled the field, but when we went into the permissions में हमने सिर्फ उसको view का access दिया है. Because of that, the field is actually not visible or not editable. Okay, so we'll just go to permissions once again and let's see. यहाँ पे see registration number, मैंने ये last two check marks निकाल दिया है. So because of that, it is not letting you edit them. What access I did not give? Edit and correct का मैंने access नहीं दिया है. What access did I give? View current and view history. It means it is only allowing you to view. View current बोल तो view current record. View history बोल तो in case if there are any previous records, वो भी आप देख सकते हो. So you can only view the registration number. You cannot maintain it. Okay, so it is not allowing to type anything or maintain anything. Total savings, let's say यहाँ पे आपने कुछ number डाल दिया है. Okay, and then I save this. मेरा नंबर सेव हो गया. अभी देखो टोटल सेविंग्स में हमें स्टार्स दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे मैं शो बोल के क्लिक करूंगा तो देन इट इज अपियरिंग. सो नॉर्मली दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू अपियर. सो व्हाई इज इट शोइंग स्टार्स? बिकॉज यू वांट टू मास्क दिस पर्टिकुलर फील्ड. मास्क बोले तो यू वांट टू हाइड इट. तो टोटल सेविंग्स मुझे किसी को नहीं दिखाना है. ओनली द एम्प्लॉय शुड बी एबल टू सी हिज टोटल सेविंग्स, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी पर्सनल. तो यहां पे मैंने मास्क को यस बना दिया. तो मास्क बोले तो उसको एक मास्क कवर दे रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस फील्ड इज शोइंग एज स्टार्स. ओके, so is it clear now? Yeah. So I want you to do similar thing. I'll remove all these fields because I want you to practice all of these, and that is the reason I'm expecting you to redo everything, even though I've explained. और मैं अगर ये चीज ऐसी रहने दूंगा ना तो you can just copy paste it, and that's why I'm removing it. Okay, and one more thing, you always have an option to explore the existing field configuration. जो जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड्स है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो एक एक करके उसमें जाओ, जाके देखो व्हाट डिड दे मेंटेन. अगर कहीं पे कुछ डाउट आए कि यार ये फील्ड का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, व्हाई शुड वी मेंटेन दिस फील्ड, ओके, ऐसा कुछ डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी. All that doubts will come when you start exploring each and everything in the system. True. Okay, so you try to maintain new fields
इफ यू हैव सम डाउट देन ये इतने सारे एग्जिस्टिंग फील्ड्स है, ये भी आप देख सकते हो, इनको देख के भी आप कभी कभी आपको आइडिया भी आएगा. Mm-hmm. Okay, so if you're still facing Yeah. any issues, you come back with your questions in the next class or you can ping me. Yeah, definitely. ठीक है.